So hello guys and welcome back to another video. My name is Sahil, Master on CodeForces. I have been 5-star on Code Chef. I have been to ICPC Regional. I have also cracked Google Code Jam. That was about me. तो आज हम solve करेंगे contest 7 problem D. First contest था. It was based on Techno Cup, so the problems were hard. So we are given a question. Alice, potion making professor, brew and you are given a set of n facts which reads ingredients ratio x2 a upon aj is equal to x upon 5. He decided he will allow students to pass as a submit a portion which specifies n requirements. Change the positive integer amount of find the total portion which passes. As the result can be very large, you should print answer model. तो प्रॉब्लम में क्या दिया है? प्रॉब्लम में अपने को क्या है that we are given some ingredients R1 R2 as normal. We are given some ingredients R1 Rn. Also अपने को n-1 relation. Keep this number in mind. बहुत familiar होगा आपको. और अपने को n-1 relation दिए terms of ratio. तो अपने को दिया हुआ है R1 is let's say x upon y. We're given R3 upon R2 is some number y upon z. Rn over R1 is Rn over R1. तो अपने को ऐसे रिलेशंस दिए हुए हैं. So what we need to find is we need to find the sum R1 plus R2 plus R3 on Rn modulo जो number दिया. And all of these should be integers और इन सब का sum क्या होना चाहिए? मिनिमम. राइट. तो हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? राइट. तो पहले तो अपने को सबकी क्वांटिटी ढूंढनी है. लाइक इन व्हाट क्वांटिटी हमारे पास सारे हैं. तो ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट्स अज्यूम अगर अपने को सबकी क्वांटिटी निकालनी है तो हमको एक फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि रेशियोज में दी हुई है. एंड हमने अगर कोई भी एक फिक्स कर दी देन हम सबकी क्वांटिटी निकाल पाएंगे. क्या कह रहा हूँ? लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम टेस्ट that we can. सैंपल है. मेरे को दिया है R3 over R2 की रेशियो 3:4. R1 over R2 ये जैसे R1 over R2 is the ratio 4:3. Also R1 over R4 is in the ratio 2:4. अब सब रेशियोज में है. अब मेरे को इन सब की क्वांटिटी मेरे को एब्सोल्यूट क्वांटिटी निकालनी है, राइट. तो लेट्स मैं एक फिक्स कर लेता हूँ. लेट्स से आई फिक्स R1 पर एंड मैं इसको फिक्स करूंगा मिनिमम अमाउंट. आई विल फिक्स दिस 1. आई विल फिक्स दिस इक्वल टू 1. देन मेरे पास R4 की क्वांटिटी आ जाएगी. आई विल गेट द क्वांटिटी ऑफ R4. R4 मेरा क्या हो जाएगा? 4 into 2. R4 बिकम R4 में विल बिकम 4 into 2 R1. मैंने R1 को 1 फिक्स कर दिया. दिस इज R1. R4 बिकम राइट. मेरे पास R4 की वैल्यू भी आ गई, R1 की वैल्यू भी आ गई 1. जल्दी R3 निकालेंगे. दिस विल कम आउट टू बी R2 मेरे पास भी है नहीं. पहले R2 निकाल लेते हैं. R2 मेरे पास आएगा दिस इक्वेशन से. R2 विल कम आउट टू बी 3 into 4 R1. So R2 will come out to 4 R1. So R2 will be equal to 3 R2. फिलहाल मेरे को R3 निकालना है तो 3:4 पर मैंने निकाल रखा है. So this will become, so my R3 will come out to be. तो तुम देख रहे हो ना, अगर मैंने R1 फिक्स किया I am able to calculate all these values. I am able to find R2, I am able to find R3, I am able to find R4. बट तुम अगर चेक करोगे, लेट्स राइट दिस डाउन. मेरा R1 था ये 1, मेरा R2 था 3:4
right? My R4 was R3 was 9. R3 R3 R4 was 2. अब मेरे पास सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है, राइट? एब्सोल्यूट वैल्यू तो आ गई है, पर उसने बोला क्वेश्चन में दैट वी नीड इंटीजर वैल्यूज, राइट? तो इंटीजर में कैसे बनाएंगे इन सबको? हाउ डू व्हाट इज इंटीजर? सिंपली कैल्शियम, जो इनका डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 16 है अपना, 4 का फॉर 16 का एलसीएम, वी फाइंड एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर अपॉन 1 अपॉन, तो 4 16 1 1 का एलसीएम होगा 16, so we can multiply all this by 16, this becomes 16, becomes 3 into 4, this becomes 12, this becomes 9, this becomes 32. Then we add all these, this comes out to, then we mod this, mod बहुत बड़ा है हमारा, this case they are. So this is how you will do it on a notebook. आप copy paste को ऐसे solve करोगे. But now how do you solve this using a code? आप how do you solve this using a code, right? तो एक बार दिखा दूँ, या so the answer was 69, तो अपना आंसर सही आया। तो आप इसको कोड से सॉल्व करोगे, तो फर्स्ट यू कैन फिक्स R1, आप R1 फिक्स कर लोगे 1, बट देन हाउ डू यू फाइंड R2 R3 R4, राइट? क्योंकि you don't know how to find, you don't know how to link these. So the link comes from this n minus, but I told you to remember this n minus. तो पता, we can always find the, so the question में लिखा हुआ है, it is written, yeah, it is granted that the set of facts remember is sufficient to uniquely determine the original values of Ri, right? So जो अपने रिलेशन दिए हैं, they are sufficient to always find n, और मेरे पास n वैल्यूज हैं, I am given n nodes and I am given n minus 1 relations, so these are n minus 1 edges, right? तो ये मेरी ट्री बन रही है, right? So basically R1 and R4 have a edge between them. R1 and R4 have a edge, right? So if I know the value of, if I know the value of R1, then I can give this edge a weight. मैं इस edge को एक weight दे दूंगा, let's say weight of this edge will be 4 upon 2. Then if I go from R1 to R4, I know that R4 will be weight of this edge, that is weight of this edge, let's say W into value of my previous node, value of R1. This is how I find value. So this is how I find value of every node. See, नीचे draw कर लेते हैं. So I will draw, if I have two nodes A and B and I am given कि उनकी relation है A upon B, let's say RA और RB लिख लेते हैं. Let's say RA upon RB, R in ratio X upon Y. Then I can add an edge between A and RA and RB, which means I can add edge between A and B. और इसका जो I will add a weight of Y upon X side and I will add a weight X upon, right? अगर मेरे को A की वैल्यू मालूम है, that is RA, and if I go from RA to RB, I can calculate RB as, जो इस edge का weight है, that is Y upon X, to जो मेरी previous node का weight है, that is RA. Similarly, if I go from B to A, I can calculate RA as equal to X upon Y into weight of the previous जहाँ से मैं आ रहा हूँ उसमें, that is R, right? So अब तुम देख रहे हो, like we are able to get this ratio from these relations. So this is how you form your tree basically. तो अपने अब दो step clear हैं. So what we can do is I can fix value of my R1 equal to 1. फिर मैं इन सब की ट्री बना लूंगा, राइट? मेरे को रेशियो मालूम है सबके, आई नो द रेशियोज, आई विल फॉर्म अ ट्री ऑफ दिस सॉर्ट. ऐसे मेरी ट्री बन जाएगी धीरे धीरे. हर एक में एक डायरेक्टेड एज बाहर आ रहा होगा, एक डायरेक्टेड एज अंदर जा रहा होगा, राइट? बाई डायरेक्शनल काइंड ऑफ ट्री.
अब मेरे को इसकी वैल्यू मालूम है, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरी नोड, आई कैन कीप गोइंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरी नोड, राइट। आई नो कि अगर मेरा रेशियो ए अपॉन बी है, देन द ए रेशियो बी मॉड इज इक्वल टू ए मॉड बी, सॉरी, ए मॉड्यूलो मॉड टू मॉड इनवर्स ऑफ बी। अगर आपको मॉड इनवर्स निकालना नहीं आता, देन यू गाइस कैन लुक अप हाउ टू फाइंड मॉड इनवर्स, राइट। आई विल नॉट बी टीचिंग यू, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं। So basically you need you can find R1, and then you can find ratio of every node, and then you can calculate the ratio mod this, right? तो अब अपना काफी स्टेप क्लियर हो गया, राइट। अपन ने कहाँ तक निकाल लिया? So we have finded these ratios now. I know this ratio, I know this ratio, I know this ratio, I know this ratio. मैं इन सब ratios को ऐड भी कर दूंगा, राइट। I add these ratios, अब I know इसकी वैल्यू, राइट। मेरे को इतना मालूम हो गया, लाइक हाफ ऑफ योर वर्क इज डन, बट जो अगला हाफ है वो थोड़ा और हार्ड है। नाउ यू नीड टू फाइंड द एलसीएम, राइट। अब आपको इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई भी तो करना है बाहर, राइट। देन यू विल गेट दीज वैल्यूज, बट एलसीएम आप निकालोगे कैसे? बिकॉज यू आर डीलिंग विद मॉड, राइट। एंड व्हेन आप मॉड से डील कर रहे हो तो एलसीएम निकालना काफी हार्ड हो जाता है, बिकॉज जो एलसीएम है, जो हमारा एलसीएम है, वो मॉड की जो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता। लाइक जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, लाइक इफ यू डू a into b to c mod something, mod, let's say mod, then this mod can propagate, this can become a into b mod, right, and to c mod. This is all right, but LCM में ऐसा नहीं होता। like LCM of a b c में अगर आप यहाँ पे अगर इसका मॉड लोगे, then this is not equal to LCM of AB का मॉड, और इसमें बाहर C और इसके, these are not equal, like जो जो अपना मल्टीप्लाई है उसमें अपना मॉड प्रोपेगेट हो जाता है, these are equal, but these are not equal, right। LCM में अगर आप मॉड मॉड यूज कर रहे हो तो LCM निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द LCM, राइट। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ इतना आपने निकाल लिया, यू सेट द वैल्यू ऑफ R1 इक्वल टू 1, आपने ट्री बना ली, फिर आपने ट्री में सबका रेशियो निकाल लिया, एंड आपको सब रेशियो का सम मालूम है। But now you need to find the LCM, so you can multiply it with the LCM. तो LCM निकालने के लिए you have to keep track of the prime factors, right? Like in this, if I have to calculate, I will keep track of prime factors here. I know prime factors of R1. This is equal to 1. I will write this as. Then for R2, I will write this as 3 to 2 the power minus. R3 will be written as 3 square to 2 the power minus 4. R4 will be written as normally 2 R4. अब आप इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे निकालोगे? आपको पता है जो भी नेगेटिव वाले नंबर्स हैं आपके, वो सब नीचे आ रहे हैं, राइट। तो फॉर एवरी प्राइम नंबर यू फाइंड इट्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है इसमें सबसे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 2 द पावर माइनस 4। तो इसमें अपना एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 द पावर माइनस 4। सिमिलरली अगर अपने पास बहुत सारे मतलब नंबर्स हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लेट्स से आई गेट b द पावर -5, a the power -3, then there is another number somewhere जहाँ पे आपकी a the power माइनस है, b the power -3 है, c the power माइनस, और कुछ और भी फैक्टर्स हैं। लेट्स से अनदर नंबर है जहाँ पे a की वैल्यू -5 है, वैल्यू माइनस, राइट। अब आपको अगर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम है, देन यू कैन कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इजीली। एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, एलसीएम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिनोमिनेटर्स के, राइट। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसमें सबसे नेगेटिव
फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बी की है -5, तो एलसीएम विल डेफिनेटली कंटेन -5 बी ऑफ माइनस। सिमिलरली ए की सबसे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है -5, ये रही। एलसीएम विल आल्सो कंटेन ए दी पावर माइनस। सी की सबसे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है सी दी पावर माइनस, तो एलसीएम विल आल्सो कंटेन सी दी पावर माइनस, so this will be my LCM, right? तो नाउ यू नो कि अगर आप किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन सेव कर सकते हो, then you can get the LCM of that number also. This is basically what I want to do. I want to store these pairs as their prime factorization. अगर मैं इनको इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टोर कर लूंगा, then I can get their LCM easy. अगर मैं इसको मॉड के इसमें सेव करूंगा देन आई कैन नॉट गेट देयर एलसीएम, क्योंकि मॉड से लाइक आई टोल्ड यू, मॉड से एलसीएम लाइक मॉड डज नॉट फेवर एलसीएम, बेसिकली सेड दैट मॉड और एलसीएम डू नॉट गो वेल टुगेदर। तो आई विल स्टोर दिस पेयर्स एज देयर प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। बट अब तुम क्वेश्चन करोगे लाइक इफ आई नो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ R1, राइट, बट अब मेरे को इसको R2 से अब मेरे को मैंने इसे R2 निकाली, लेट्स से R1 अपॉन R2 इक्वल टू x अपॉन y। मेरे को R1 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स से मेरे को मालूम है, दिस इज a दी पावर m b दी पावर n c दी पावर, देन if I want to find the prime factorization of R2, what I can do is मेरे को I will calculate the prime factorization of x, I will find the prime factorization of y। ये मैं पहले ही सेव करके रख लूंगा so that I don't have to calculate this again and again। I will save the prime factorization of all the n numbers, I will save the prime factorization of all the n numbers, पहले से करके रख लूंगा। तो जब मेरे को R1 से R2 ट्रांजिशन करना है, आई नीड टू नो दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ R2 एज वेल। तो ये कैसे निकालूंगा मैं? मेरे को x की प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम है, मेरे को y की प्राइम मालूम है, देन आई कैन कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x अपॉन y। लेट्स से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, दिस इज सम d दी पावर z, a दी पावर इज l, b दी पावर q, क्योंकि मेरे को वेरिएबल्स का नाम है। then from R1 to R2 I know that इन दोनों का x upon y into R1 मल्टीप्लाई होता है, राइट, सॉरी y अपॉन R2 में y अपॉन x हो रहा है, तो लेट्स इसको इसका नेगेटिव हो जाएगा सबका, राइट, इसका नेगेटिव हो जाएगा y अपॉन x। तो मेरे को मालूम है R2 की वैल्यू दिस, जो मेरा ये y अपॉन x का प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, देन आई नो R2 विल बी a दी पावर m b दी पावर n पावर p इंटू y अपॉन x। अब मैंने y अपॉन x की प्राइम फैक्टराइजेशन ये जूम कर रखी है d दी पर जो, दिस विल बिकम d दी पावर z a दी पावर 2, दिस विल पावर m l पावर और c पावर p, दिस विल बिकम माय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ R2, राइट। सो अगर मेरे को R1 की प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम है, आई कैन ऑल्सो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x अपॉन y, क्योंकि ये आई कैन फाइंड दिस इन log ऑफ n। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, एनी नंबर हैज अप्रोक्सीमेटली log n फैक्टर्स, राइट, so any number n has approximately log n factors। तो मैंने x और y की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाल के रखी हुई है, आई नो दे हैव अप्रोक्सीमेटली log n फैक्टर्स, तो मैं इन log n फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, राइट, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो सो एवरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विल टेक अप्रोक्सीमेटली log n टाइम। तो अब मेरे को R1 R2 की मेरे को मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन, सिमिलरली आई कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल R3 R4 R1 R4 R5 सो ऑन टिल Rn, राइट। तो अब फिर मैं कैल्शियम निकाल लूंगा, राइट। आई विल कीप ट्रैक कि मेरे को सबसे नेगेटिव एक्सपोनेंट कौन सा मिला है, लाइक यहाँ पे a दी पावर m माइनस एल है, यहाँ पे a दी पावर m है, आई विल कीप ट्रैक कि a का सबसे कम एक्सपोनेंट कौन सा मिला है, क्योंकि मेरे को एलसीएम निकालना है, एंड एलसीएम लाइक आई टोल्ड यू, सबसे नेगेटिव एक्सपोनेंट से मेरा एलसीएम निकलता है, लाइक इन दिस केस सबसे नेगेटिव एक्सपोनेंट मेरा एलसीएम।
So I'll keep track of the most negative exponent, and in the end अब मेरे पास सब है, मेरे को sum भी मालूम है, अब I know this sum, मेरे को LCM भी मालूम है, then I can just multiply this LCM, I can multiply this into LCM of all the denominators. Let the denominator be 1, T2, T, and I can just multiply this into LCM and I will get my type. So this was basically the gist of the problem. I will show you my code. This ran in approximately 13 seconds. So yeah, code was okay. So this is my let's write in the editor on it. So this is my calculation. This is my calculation function. ये करता है, this function calculates basically this function calculates prime factorization of every number. Every number up to n, right? ये करता है, या स्टोर कैसे कर रहे हैं हम, मैंने एक मैप बना रखा है वेक्टर का. So basically these will be vectors. Let's say factor of 3 है, तो इसमें मेरा मैप, इसमें मेरी पेयर, इसमें मेरा मैप की पेयर बन रही है. This will be a pair 3, 1. This is how it is. मेरा 12 है, this will have 2 pairs. One is 3, 1. One is 2 to the power 2. This is 3 to the power 1, 3 to the power 1, 2 to the power 2. This is how I'm storing the factors. This is 24. This will be 6 into 4. This is 2 to the power 3, 3 to the power 1. So this is how my factors are stored. So I iterate from 2 to max n, then I go from 2 to square root, and this will take O of n max n square root max. मैंने हर एक का निकाल लिया, एंड आई कीप इंक्रीमेंटिंग. बेसिकली मैंने मैप फुल कर लिया. दिस आई विल नॉट गो इनटू लाइक हर एक लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं बट दिस फंक्शन. और मेरा मैक्सिमम मैंने डिफाइन कर रखा है 2e⁵ क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है मेरे को दे रखा है दैट x and y will be less than n and n value 2 into e⁵, right? Also मैंने इसको सिर्फ एक बार रन करा है. I only need to run this once. So max n into square root max n, this will only work go once. So approximately this will run O into 10 to the power 7. So this will only run once. Then this is my power function. I don't think you guys इतना किसी काम का नहीं. This is just my binary explanation. So this is to calculate a to the power b faster. And if you guys do CPA, I think you have seen this before, to calculate a to the power b faster. Basically in log beta. So just to calculate the faster. This is mod inverse. If you guys know Fermat's theorem, 1 upon x modulo is equal to x to the power mod minus if mod is prime. ये आती है, I'm not going to explain the theorem, but this theorem comes because x to the power mod minus 1 mod modulo mod is equal to 1 or something. This comes. So this is how I calculate mod inverse. Then this function I was using at first, but this is my DFS क्योंकि जो मेरी ट्री बनी थी उसको ट्रेवर्स करने. This is my LCM. So yeah, this is my main code here. मैं पहले n में आया, I went C in and n,
दिस इज माई एडजेसेंसी लिस्ट राइट, मेरी पेयर है लॉन्ग लॉन्ग एंड मैंने यहाँ पे पेयर स्टोर कर रखी है. दिस इज माई एक्स अपॉन वाई रेशो जो मैंने आपको यहाँ बताया था राइट. weight of my edges, this is weight of my edges by upon x y, this is what I'm storing here. You can also store, but like you need to know the prime factorization of this, so I recommend you save this as y upon x. तो मेरा स्टार्टिंग में आंसर 1 है. आंसर 1 मेरा क्यों है? बिकॉज आई एम इज मेरा r1 1 है. so I'm basically starting this as equal to 1 right. then मैंने dfs ran dfs. ये मेरी नॉर्मल dfs है. I think you guys need to study the code. थोड़ा हार्ड होता है बट या. सो दिस इज माय न्यू मॉडल. ये क्या करता है मेरी मेरे को मालूम है कि टू कैलकुलेट द सम आई डोंट नीड टू कैलकुलेट प्राइम फैक्टराइजेशन. जो मेरा सम है वो तो मेरा बिना प्राइम फैक्टर्स के ही आ जाएगा. लाइक इफ आई नो r1 I can just do x into y r2 let's say. then I can just calculate r2 as r1 into x का mod to y का mod inverse of y right. so I can calculate r2 directly and I can add it to sum, but LCM के लिए मेरे को prime position. so this is what my mod val does. ये मेरे को ये वाला sum find करने में help कर रहा है. I can just find this sum using normal modular operation. तो मैंने आंसर में ये न्यू mod val ऐड कर दिया. आंसर I did mod and this is the part where I calculate the prime factorization. ये मेरे को LCM में आगे help कर. so like I told you guys, this part मेरे को r1 की फैक्टराइजेशन मालूम है. r1 की फैक्टराइजेशन मैं पास करता हूँ एज रेफरेंस. दिस इज माय वैल. ये r1 की फैक्टराइजेशन है ठीक है. अब मेरे को जो मेरा वेट है दिस इज माय एज वेट राइट. तो मैं बेसिकली x और y की फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूँ यहाँ. आई कैलकुलेट फैक्टराइजेशन ऑफ x एंड y जो मैंने मतलब पहले ही स्टोर करके रखी हुई है ड्यू टू माई कैल्क. मैंने यहीं पे कैलकुलेट करके रखी है. आई एम जस्ट यूजिंग इट. तो जो मेरा न्यूमरेटर है वेट डॉट फर्स्ट, जो मेरा न्यूमरेटर है लेट्स से जो मेरा एक्स न्यूमरेटर है जो जो भी उसमें प्राइम फैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी है वो इसमें ऐड होगी राइट. मैं वो फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहा हूँ. और जो वेट डॉट सेकंड में है जो न्यूमरेटर में y है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो सब्ट्रैक्ट होगी. तो वो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ राइट. एंड दिस इज द मिन पावर. सो ये मैं क्यों रख रहा हूँ एलसीएम में? आई एम कीपिंग द मोस्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट राइट. ये मेरे को स्टोर करके रखना है क्योंकि मेरे को एलसीएम के लिए यही चाहिए होगा. सो आई एम स्टोरिंग दिस. आई एम स्टोरिंग द मिनिमम एक्सपोनेंट फॉर अ फैक्टर दैट आई एम फाइंडिंग. दिस इज माय मिनिमम एक्सपोनेंट दैट आई एम फाइंडिंग राइट. देन आई डीएफएस टू द नेक्स्ट नोड राइट. अब मैं डीएफएस करके वापस आ गया हूँ. तो अब आई नीड टू रिस्टोर माई वैल्यू टू द ओरिजिनल वैल्यू. मैंने यहाँ पे जो मैंने चेंजेस यहाँ पे करे थे आई रिस्टोर क्योंकि आप डीएफएस करके बाहर आ गए हो. सो नाउ यू डोंट नीड द चेंजेस एनीमोर जो आपने पहले करे थे राइट. देन इन दी एंड जब मैंने डीएफएस कर लिया बेसिकली डीएफएस मैंने क्या अचीव कर लिया. डीएफएस से मैंने सबसे नेगेटिव एक्सपोनेंट ढूंढ लिए और मैंने ये वाला सम भी फाइंड कर लिया. नाउ आई नीड टू फाइंड दी एलसीएम. मेरे को एक्सपोनेंट पता है. नाउ आई जस्ट इटरेट इनटू मीन पावर. और अगर इसका x डॉट सेकंड इज लेस देन 0 मतलब ये डिनोमिनेटर में है देन आई फाइंड इट्स इनवर्स. आई डोंट फाइंड इट्स इनवर्स. आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस क्योंकि एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है. so I just multiply this directly. So if I know that my for some factor x अगर उसकी frequency negative p थी then LCM will be x the power p का फॉर्म होगा ठीक है. तो बेसिकली मैं x the power p मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो वो फैक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो मेरे को इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से x the power माइनस p था तो मेरे को x the power p से मल्टीप्लाई करना है. मैंने यहाँ पे -1 से. then I calculate answer was not and then I just print out the answer. That was it. I think this was a hard problem. Not hard, but it was implementation heavy and you need to have clear basics. Like मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी सॉल्व करते हुए.
But yeah, so that was it for this video. I hope you guys like it. I hope the audio quality is better now. Also, thank you Newton School for helping with this video. If you guys don't know about Newton School, they are currently offering a 6-month full stack development course. Right, there is zero placement fee. Like you don't pay after placement model. You don't have to pay anything until unless you get placed. And they are offering a minimum package of 5 lakhs per annum, but you can track up to any package that you are capable of. They will get you placed into top MNCs like Google, Zomato, and Academy, etc. And all their mentors are from top MNCs as well, from Tang, like from Google, Microsoft, Goldman Sachs. So you can be assured that the quality of the content is top notch. You don't have to compromise on anything here. And you don't need to have any kind of prior knowledge of coding. You can just sign up for the course. They will give you a simple aptitude test. और अगर आप उसमें अच्छा करते हो, you will be signed up for the course. So that was it for the video, and hope you guys like it. If you did, leave a comment, subscribe. अगर आपको doubt है, you can ask me. I will leave my submission link with description so you can read my code. That was it. So thank you for watching. Bye guys.